This conference will now be recorded. Now, so we have a two different way to set up the infrastructure for any organization. So यहाँ पे अपने पास कुछ systems available हैं like this, multiple machines are available. टोटल अगर हम बात करें नेटवर्क को सेटअप करने के लिए तो यू नो दैट दो मेथड है, वी हैव अ टू डिफरेंट मेथड टू सेटअप द नेटवर्क. एक वायर्ड हो सकता है, दूसरा वायरलेस हो सकता है. इज दैट करेक्ट? Yes. या तो हम कम्युनिकेशन जो करते हैं या तो वायर्ड से होगा या तो वायरलेस से होगा. लेकिन अगर हम लॉजिकल कनेक्शन की बात करें, लॉजिकल कनेक्टिविटी की बात करें, तो लॉजिकल कनेक्शन के केस में दो डिफरेंट पार्ट में ये डिवाइड किया गया है. पहला पी टू पी एंड दूसरा डोमेन क्लाइंट. ठीक है, पहला है पी टू पी एंड दूसरा है डोमेन एंड क्लाइंट. पी टू पी का मतलब होता है पीयर टू पीयर. डू यू Yeah. हैव आइडिया अबाउट पीयर टू पीयर, मीनिंग ऑफ पीयर टू Yeah. पीयर? Like simple connection between two computers. Anything else that you can add? No. No. Okay. For example, this is the switch that we have, right? And यहाँ पे भी switch तो mandatory है, switch तो लगेगा ही लगेगा, right? Each and every machines are connected with same switch because centralized device है. P2P का मतलब होता है वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क. व्हाट यू थिंक अबाउट द वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क? मीनिंग क्या होगी इसकी? Work group based network means the computers, all the computers, they are connected to a switch and in a limited geographical area, like that. Anything else that you want to add? Because the geographical area is a separate part, because with the help of VPN we are able to make a communication in different zones and regions as well. No problem. See, this is my Windows 11 operating system. I'm going to open sysdm.cpl, that redirect you on the system properties page. सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए रन पे टाइप करेंगे system.cpl, और आप यहाँ पे देखो हमारा जो सिस्टम है विच इज अवेलेबल इन वर्क ग्रुप. और डोमेन का आइकॉन जो है वो ग्रेड आउट है क्योंकि हमने इस मशीन को डोमेन का मेंबर नहीं बनाया. इज दैट क्लियर? Yes. The meaning of P2P, the meaning of work group means entire systems are self owner. Entire machines are self owner. उनके ऊपर किसी का बर्डन नहीं है, किसका दबाव नहीं है. Hmm. जो बंदे एक्टिविटी करना चाहते हैं खुद करेंगे. बट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर द P2P नेटवर्क? अगर सभी एम्प्लॉय, सभी क्लाइंट या सभी मशीनें अपने आप में ऑनर हैं, तो हम P2P नेटवर्क को क्यों सेटअप करेंगे? उसका रीजन ये है, we need to use P2P network for the file sharing, right? If you want to share the file, if you want to share the internet connection, हमें अगर इंटरनेट शेयर करना है, इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, राइट? अगर हमें कोई डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस केस में हम पेयर टू पेयर या वर्क ग्रुप नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे. डन? Yeah. Yes. All system are self owner or PCR सेल्फ ऑनर. ये सभी मशीनें अपने आप में ऑनर है. चलो यहाँ पे और बात करते हैं अभी. अब अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन एज पर द नेम सजेस्ट आपको इन सभी मशीनों को कंट्रोल करने के लिए जो ऑलरेडी हमारे पास हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वी मस्ट नीड टू ऐड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे हम सर्वर ओएस इंस्टॉल करेंगे. इट मे बी 2016, 2019 या 2022. इनमें से कोई भी सर्वर हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं. 2012 इस्टेब्लिश करते हैं. Basically, the agenda of domain client networking to control multiple client machine with the help of single server. आप यहाँ से जो डोमेन बनाएंगे, ये जो एडी है, यहाँ से जो आप डोमेन से यूजर्स बनाएंगे ना, लाइक यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3, आप जो एडी से यूजर बनाएंगे ना, वो सेम यूजर
आपके इससे लॉग इन होंगे, आपके क्लाइंट जो है उनका इस्तेमाल करके मशीन को लॉग इन कराने का काम करेगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, yes. Yes, sir. ठीक है, अब अभी तो ये लोकल की बात हुई। अगर आपने एक्सचेंज सर्वर सेटअप कर दिया, इसी मशीन में आपने क्या कर दिया, एक्सचेंज इस्टेब्लिश कर दिया, या फिर वी हैव अ बजट, अपने पास इनफ बजट है, तो हमने क्या किया, एक दूसरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगर किया और उस हार्डवेयर को इसी सर्वर से अटैच कर दिया, और इस सर्वर के ऊपर हमने एक्सचेंज सर्विसेज को इंस्टॉल कर दिया। इस मशीन में हमने एक्सचेंज सर्विस को इंस्टॉल कर दिया, एक्सचेंज सर्वर को। अब एक्सचेंज सर्वर के अंदर जो मेल बॉक्स बनेंगे ना, मेल बॉक्स इन द सेंस जो ईमेल्स बनेंगे, वो इसी एडी यूजर का पार्ट रहेगा। दिस इज द एक्चुअल वर्क, दिस इज द एक्चुअल टास्क। इज दैट क्लियर? Yes. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No. ठीक है ये सब। Yes. ओके, सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क ग्रुप में हम नहीं जाना चाहते, बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग। हमें जो टास्क परफॉर्म करना है डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग से स्टैब्लिश करना है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क हम अपने इन्वायरमेंट में एक सर्वर 2016 लेटेस्ट वर्जन ही उठाएंगे, बिकॉज जो एडी कनेक्ट टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट ने V2 लॉन्च कर दिया है अभी। डू यू हैव आइडिया अबाउट एडी कनेक्ट, एडी AD कनेक्ट टूल? connected. Yes, एडी yes. कनेक्ट टूल है ना, अभी उन्होंने V2 लॉन्च कर दिया, वर्जन 2 लॉन्च कर दिया है। सो Hmm. वर्जन 2 इज बेसिकली जो कि एप्लीकेबल है 2016, 19 और 2022 के लिए। Hmm. मींस अगर अपने पास 2012 का सर्वर है तो एज रेडी Hmm. कनेक्ट काम नहीं करेगा उस पर। नहीं. Hmm. ठीक है ना? ठीक है सर. हाँ जी. So our responsibility to set up your own network or set up your own domain controller local machine पे, और domain controller should be installed on एटलीस्ट सर्वर 2016, 19 कर दो, 2020 कर दो, वो क्लियर है, बट एटलीस्ट सर्वर 2016 होना चाहिए। ठीक है. एनी क्वेश्चन अबाउट द डायग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया? नहीं नहीं, नो क्वेश्चन सर. ठीक है, वर्क ग्रुप एंड डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। Yes. Work group means entire machines are self-owner. Each machines are available in work group format. We can set up the network for work group P2P to share the file, folder, data, internet and any kind of device like the printer, hard disk or pen drive. अगर हमें Hmm. नॉर्मल शेयरिंग पर्पज का इस्तेमाल करना है, स्कूल हो गया, साइबर कैफे हो गया, घर की बात करें, तो यहाँ पे हम Hmm. सेटअप करते हैं क्या, इंटरनेट को शेयर करने के लिए लोकल स्टोरेज, लोकल वर्क ग्रुप। Work group. फॉर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के केस में क्या होता है, वी ऑलवेज प्रोसीड विद द डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग। हमेशा हम क्या करते हैं, डोमेन और क्लाइंट नेटवर्क को सेटअप करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes sir. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू सेटअप। अगला जो हमारा एजेंडा है, बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट द वेरी बेसिक ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। सो अगर हम सिंगल वर्ड में बोल रहे हैं कि व्हाट इज एडी, व्हाट इज द एक्टिव डायरेक्टरी, सो हाउ वी कैन डिस्क्राइब इट, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? Active Directory is a directory which contains, it's a, like a container which contains users, groups, हम्म, chat हम्म, mailboxes, and computers. हम्म, All of them in a directory form, means all the with all those all the attributes they are stored in Active Directory. These can be treated as objects. All of these are objects, and they are a part of the organization for which Active Directory belongs to. so AD is a basically a type of database which provides us a centralized control to manage our resources, network resources। एडी के थ्रू सिर्फ क्लाइंट मशीन ही नहीं कंट्रोल होता, विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी वी आर एबल टू कंट्रोल एंड मैनेज आवर प्रिंटर, वी आर एबल टू कंट्रोल एंड मैनेज आवर अनदर नेटवर्क डिवाइसेस दैट वी हैव। इसी के थ्रू आप ESXi होस्ट जो कि VMware का प्रोडक्ट है, उसको भी आप कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। Clear? So you Yes. can say that the Active Directory is a type of database which is uh,
Active Directory is a type of database that provides us a centralized control to manage our network resources. चलो आगे बढ़ते हैं इसमें. Yes. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी के केस में बहुत सारी चीजें रहती हैं. You always we are able to install Active Directory services only and only server operating system. Like we have a server 2016 or 2019 या कोई सा भी वर्जन का सर्वर में अवेलेबल है. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टॉल इट. बाय डिफॉल्ट आपको सर्वर पे ये नहीं मिलता इंस्टॉल ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. देन it will provide you objects and containers. Okay, objects and container. We can also find the FSMO roles. We are able to find the GPOs, group policy objects. With the help of our client server operating system, we can control our multiple client machines which are available in our organization like this. The entire system are connected to each other. ये server हमारा switch से connected है and switch is also connected with multiple client computer. ये अपने पास client operating system है that work over a NOS. What is NOS? Network operating system. Network operating system, which is combination of server प्लस क्लाइंट Client. मशीन. ठीक है. तो क्लाइंट में क्या क्या हो सकता है. क्लाइंट के केस में विंडोज 7 हो सकता है. विंडोज 8 को क्लाइंट माना जा सकता है. यू नो दैट विंडोज 10 एंड 11 Yes. ये हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसीडर किए जाते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यू नो वेरी वेल अबाउट द सर्वर 2012, 2016, 2019, 2022. ये हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसीडर किए जाते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंसीडर एज. Any doubt, any question? The last line that you spoke, the combination is called as NOS is a combination of server plus client operating system, Abacus Client. Okay, operating systems. which is considered as a network operating system. Operating system. Done. Can we proceed for Yes, next? yes, please. Okay, great. Next question is install installation of server operating system. Then we can configure Active Directory. Then we'll manage AD objects. Then we'll talk about the FSMO role, and we'll also talk about GPUs. This is the agenda that we need to follow. ठीक है. सो हमें क्या करना है, अपना खुद का सेटअप बनाना है फॉर इंटायर प्रैक्टिकल, अपकमिंग प्रैक्टिकल. एक हम सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे और यहाँ पे हमें एक या दो क्लाइंट मशीन इस्टेब्लिश करेंगे अपने VMware वर्क स्टेशन के ऊपर. So So sir, we'll इसके proceed for software server. Sorry. जो सॉफ्टवेयर सर्वर के सॉफ्टवेयर एंड VMware software and this thing, so you are going to provide,
right? Yeah, आपके I कोई have already downloaded, हाँ है मेरे पास, तो I'll share with Google Drive. ठीक है सर। ठीक है, ये अपने पास ठीक। 2016 है, ये अपने पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है. विल सेट अप आवर ADDS सर्वर इंस्टॉल करने के बाद, देन कंट्रोल द क्लाइंट मशीन्स. जो भी अपने पास क्लाइंट मशीन है, इनको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम करेंगे. ठीक है सर। इज दैट ओके? यस। सो बैक टू द वर्क स्टेशन. VMware वर्क स्टेशन पे आ जाते हैं हम. Although I have already installed one server machine, but इसमें already हम बहुत सारे task perform कर चुके हैं, so I'm going to create a new server machine. Windows 10 को नहीं changes करेंगे, we will use the same Windows 10 machine to make our client, but I'm going to install the server 2016. Workstation पे कोई भी virtual machine बनाने के लिए, especially जब 2016 की बात आती है ना, so we just need to click on file, new virtual machine, कस्टम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट. नेक्स्ट. Do not install right now, I will install operating system later. Next. टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे 2016 इंस्टॉल करना चाहते हैं. नेक्स्ट. सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ योर VHD फाइल जहाँ पे हमें रखना है. So I wanted to put it into the different drive that I have. New 80. Let me check. uh, Fine, proceed, and change the name, new 80. RAM में I'm going to proceed with 8 gig of RAM. Make sure it's a bridge connection और इसको install कर. Once you install the domain controller, once you create a virtual machine, you need to turn on it. हमने इसमें ISO image नहीं दिया था to install the operating system. Right click on virtual machine, go to the settings. In the settings, just need to click CD/DVD. यहाँ पे connectivity दे देंगे. Use ISO image, ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ISO इमेज जहाँ पे भी रख रखा है आपने, जिस भी लोकेशन में, वहाँ से आप पिक कर लेंगे. तो हमने सॉफ्टवेयर में रख रखा, OS में, सॉरी, सर्वर OS में. 2016, open and open. You have to restart the virtual machine ताकि हम बूट करा सकें. ठीक है, proceed to install. Next. Install now. We are able to find multiple version of server operating systems are available. Windows Server 2016 is standard. Windows Server 2016 is standard desktop experience. Windows Server 2016 Data Center. Windows Server 2016 Data Center desktop experience.
So you will proceed with Windows Server 2016 data center with desktop experience. सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म, नेक्स्ट, कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाएंगे और प्रोसीड टू इंस्टॉल। ये पहला स्टेप होगा कि एटलीस्ट हमारे पास एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में होना चाहिए जिसपे हम एडी की सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। इज दैट ओके? Yes. First step that we need to follow, this is the first step that we need to follow in case of set up our Active Directory services. AD का part आगे आएगा, AD connect का part आगे आएगा, because firstly we just need to know about the procedure to set up our domain controller. Yes. So this is the way that we can use to establish our AD services. Okay. Installation is in progress. Meanwhile, let me know if you have any question. Yeah. So after this, this is a server 2016 installation is in progress. Okay. And after this, we are going to make another virtual machine and we'll install Windows 10 ISO in that. Correct, sir? Right, right. Yeah. So although I have already installed the Windows Server, sorry, Windows 11 operating system, so Windows 10 operating system, so that will use as a client machine. क्योंकि प्रोसीजर दोनों का सेम ही रहता है इंस्टॉलेशन के लिए। Yeah. Mhm. It is in progress, so we have to wait for a few more minutes. Yeah, sure. जो Azure AD कनेक्ट होता है सर, उसके लिए एक अलग वर्चुअल मशीन फिर बनाएंगे उसमें नहीं वो नहीं, इस ये जो सर्वर हम अभी सेटअप कर रहे हैं ना, हाँ। ये हमारा अप्लीकेबल रहेगा एडी कनेक्ट के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसी मशीन पे हम एक्सचेंज इंस्टॉल करेंगे, अच्छा अच्छा। इसी मशीन को माइग्रेट करेंगे, यू कैन से दैट। देखो दो चीजें हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, एक माइग्रेशन होता है, एंड बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। हम्म, सिंक्रोनाइजेशन में हमारा जो सेटअप रहता है वो ऑन प्रोमाइसिस पे रहता है, उसके केवल यूजर सिंक्रोनाइज होते हैं, और माइग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, चीजों को माइग्रेट करते हैं। तो इट विल टेक टाइम, सो वेट फॉर फ्यू just 2 minutes and then proceed. so migrate means data also goes there in Exchange Online. Correct. Migrate is that, and sync means data stays there, but users they are still to be seen in Exchange Online. Correct. Yes. So ये सर माइग्रेट के लिए हम पावर शेल का यूज करेंगे या फिर एक्सचेंज एडमिन सेंटर का ऑन प्रेम वाले? Exchange, माइग्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन, माइग्रेशन के लिए या सिंक्रोनाइजेशन के लिए? सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सिंक्रोनाइजेशन तो पा- डायरेक्ट एडी से हो जाएगा। नहीं, एडी कनेक्ट के बाद भी कुछ पावर सेल स्क्रिप्ट होती हैं जो इमीडिएट आपकी चीजों को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम एग्जीक्यूट करते हैं। डेल्टा स्ट्रिंग करके एक कमांड होती है, डेल्टा स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके हम अपने आपने कोई चेंजेस किया, वैसे माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जब आप कोई चेंजेस करते हो ऑन प्रोमाइसिस एडी पे, तो उसको सिंक होने में 30 मिनट का टाइम लगता है। यस। माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 30 मिनट तक आपको वेट करना है। अगर आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट चाहिए या श्रिंकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, पावर सेल ओपन करेंगे, वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे कमांड डेल्टा स्ट्रिंग की, तो जो भी रिसेंटली चेंजेस आपने किए हैं अपने ऑन प्रोमाइसिस सर्वर पे, वो आपका इमीडिएटली
रिफ्लेक्ट हो रिफ्लेक्ट जाएगा, इमिडिएटली सिंक हो जाएगा आपके एज्योर के पोर्टल पे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अब माइग्रेशन की बात करते हैं। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन के लिए आपको एक्सचेंज पे, ऑनलाइन एक्सचेंज पे एक सर्विस होती है मेल माइग्रेशन की, राइट? 5 तरीके के यस। माइग्रेशन होते हैं। 5 तरीके के माइग्रेशन होते हैं, जिसमें से 3 methods आर applicable फॉर द ऑल ऑफलाइन एक्सचेंज माइग्रेशन। 2 मेथड होते हैं, आई मैप माइग्रेशन और गूगल वर्क स्पेस माइग्रेशन। ठीक है। तो यस। बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। माइग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों का जो मीन्स इम्पैक्ट है, या दोनों का प्रोसीजर है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों का पर्पज अलग है। ओके। ठीक है। वी सक्सेसफुली इंस्टॉल वन सर्वर मशीन इन आवर VMware वर्कस्टेशन 2016 हमने इंस्टॉल किया है। और अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो स्क्रीन है हमें हाफ दिखाई पड़ रही है, मीन्स ये फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। इज दैट करेक्ट? नहीं सर, मुझे तो दिख रही है। हाँ, नहीं, ये अभी ये मशीन है जो है, इस मशीन के अंदर VMware टूल्स इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, हाँ जी। सो जब भी हम VMware पे कोई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, राइट क्लिक करते हैं उस VM पे, और इंस्टॉल VMware टूल्स पे जाते हैं। ये एक डीवीडी हमारे सिस्टम में अटैच कर देगा, काइंड ऑफ वर्चुअल डीवीडी। जिस पीसी पे गए, डीवीडी पे गए, राइट क्लिक किया और इसको इंस्टॉल कर दिया। ओके, ये क्या इंस्टॉल हो रहा है अभी सर? VMware टूल्स। VMware टूल्स, अच्छा ओके। VMware टूल्स इंस्टॉल करने का बेनिफिट ये है कि हमारे ग्राफिक ड्राइवर को, चिपसेट ड्राइवर को, इथरनेट ड्राइवर को, जिससे नेटवर्क वगैरह प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें, इन सभी को इंस्टॉल करता है। ओके ओके। मैंडेटरी टू रीस्टार्ट इंस्टॉलेशन के बाद। हम्म। Now we are able to find our server operating system is running properly. I'm just going to open it. अभी ये जो सिस्टम है ना, इट्स अ फुल्ली ब्लैंक, यू कैन से दैट, क्योंकि हमने इस पे कोई भी एडी की सर्विसेज नहीं इंस्टॉल की है। यस। सिस्टम इज रनिंग प्रॉपरली, बट इसमें कोई भी हमने एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल नहीं की है। द मशीन इज जस्ट लाइक एज ए नॉर्मल कंप्यूटर। ये हमारे नॉर्मल हम्म। कंप्यूटर की तरह बिहेव करेगा। हम्म। हम्म। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू शुड नो अबाउट द प्री रिक्विजिट। जब भी हम एडी इंस्टॉल करने की बात करते हैं, तो यू शुड नो हम्म। अबाउट द प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। हम्म। एडी इंस्टॉल करने के लिए हमें इसकी प्री रिक्विजिट को फुलफिल करना पड़ेगा। So let me help you to understand about the prerequisites. So what do you think about the prerequisites? Uh, any roles etc that are necessary to have before installing ADDS, or those things that are important for installing Active Directory? Without them, Active Directory won't be installed. Correct. Some prerequisites are like as manual IP address, and okay, let me help you to just write down the prerequisite to install Active Directory domain services. And it's mandatory for us. We must need to know about the prerequisite to install Active Directory domain services.
नॉट ओनली विद सर्वर 2016, किसी भी सर्वर मशीन में ADDS इंस्टॉल करने के लिए ये आप एज ए प्री रिक्विजिट कंसिडर कर सकते हैं. सो द प्री रिक्विजिट्स आर, first of all, configure manual IP address with preferred DNS address. Configure manual IP address. Then minimum 20 gig free hard disk space, 20 gig free HDD space in C drive, means operating system drive. Yes. जहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे 20 gig फ्री हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए. नेक्स्ट, सिस्टम मस्ट बी लॉग इन थ्रू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर. System means The server virtual machine. machine, the virtual Server machine or machine. physical machine. Okay. Local admin. And last option, LAN card or NIC card must be active. Is that clear? Yes, sir. Yes. चलो हमें एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इसमें प्रीरिक्विजिट का. बैक टू द सर्वर मशीन. एंड अभी जो हमारे पास सिस्टम है इसमें ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस है. CMD, लेट मी चेक द आईपी एड्रेस जो डिफॉल्ट हमें मिल रहा है अभी 10 192.168.1.10. सो सेम आईपी एड्रेस को हमें फिक्स करना है. फिक्स इन द सेंस अभी ये डायनेमिक है, हमें इसको स्टैटिक में कन्वर्ट करना है. ncpa.cpl, दिस इज द कमांड जो आपके इथरनेट पेज को ओपन करेगा. राइट क्लिक ऑन इथरनेट पेज, गो टू द प्रॉपर्टीज. IPv6 को अनचेक कर दो. IPv4 की प्रॉपर्टीज पे जाना है. दिस इज द पैनल वे वी कैन सेट अप द मैनुअल आईपी एड्रेस. तो इस मशीन को आईपी एड्रेस क्या था, क्या मिला था, 10 192.168.1.10 इसकी आईपी एड्रेस हो गई. 192.168.1.1 ये गेटवे हो गया. अब बात आती है प्रीफर्ड डीएनएस की और अल्टरनेट डीएनएस की. प्रीफर्ड डीएनएस एंड अल्टरनेट डीएनएस, दो इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेस जो हमारे सिस्टम के नेम रिजोल्यूशन को मैनेज करने का काम करते हैं, जो सिस्टम के डीएनएस सर्विसेज को मैनेज करने का काम करते हैं. Please let me know if you able to understand. Alternate DNS server, sir, you have written 888, and what is the logic behind that? Actually we don't have a more than one server. अभी अपने पास केवल एक ही अच्छा. सर्वर है, तो अल्टरनेट कोई है नहीं. मतलब ये अगर डाउन हुआ तो वी विल लॉस द डेटा. ठीक है यहाँ सर. पे अपने पास कोई अच्छा. अल्टरनेट है नहीं, तो अल्टरनेट में हम ग्लोबल डीएनएस एड्रेस यूज करते हैं. ग्लोबल डीएनएस कौन सा है, गूगल का ग्लोबल डीएनएस है. गूगल का ग्लोबल डीएनएस है विच इज 8.8.8. ये वर्ल्ड वाइड यूज अच्छा. किया जाता है. अच्छा. ओके. ओके. ठीक है सर. प्रीफर डीएनएस एड्रेस जो सिस्टम का एग्जिस्टिंग एड्रेस है, जो सिस्टम का एग्जिस्टिंग एड्रेस है उसी को हम प्रीफर डीएनएस बोलेंगे. ठीक है. क्लिक ओके, क्लोज. Now we successfully configure the manual IP address. We successfully configure manual IP address. And now let me verify कि available space कितना है C drive में. तो we have a enough space, 48 GB के आसपास है. 20 GB remaining चाहिए, मिनिमम स्पेस चाहिए, लेकिन अपने पास मीन्स 48. ठीक ठाक स्पेस अवेलेबल है. ठीक है. ठीक है. Now let's talk about the another point. The another point in the sense like as the another prerequisite that required.
third one was system should start with a local admin like that. वी हैव And ऑलरेडी डिड इट, है ना, हमने इसको ऑलरेडी yeah, लोकल done that. एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रखा है। हाँ जी, एक और था सर। लैन कार्ड मस्ट बी एक्टिव। द लैन कार्ड लैन मस्ट बी कार्ड। एक्टिव का मतलब ये है कि ये जो इथरनेट का आइकॉन दिखाई पड़ता है यहाँ पे, ये आपका हाईलाइट होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। कहाँ है सर? हाईलाइट मीन्स दिस इज द आइकॉन, ये जो या आइकन नेटवर्क हाँ आइकन दिखाई पड़ या रहा है मस्ट बी वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है। Fine. So let's proceed for the next. I think every prerequisite we successfully completed the all prerequisite. अब हम इसमें सिस्टम में AD को इंस्टॉल कर सकते हैं, right? ठीक है, हाँ जी। To install the Active Directory domain services, we just need to click on Start button. Go to Server Manager Wizard. This is Server Manager Wizard. Click Add Role and Features. Next, 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 and we are able to find this is the roles. So second role है अपने पास ADDS का, Active Directory Domain Services, ADDS. ठीक है। Next, 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 and install. Step first, install the role, and step second में हम इसमें promote करेंगे, role को promote करेंगे। Done. We successfully installed the role, and now it's time to promote the role. प्रमोट। अभी जो हमने role install किया है ना, हम उसको promote करेंगे ताकि हम एक अपना domain controller setup कर सकें। ठीक है सर। So we have two different option to promote the role. दो अलग अलग method हैं role को promote करने के लिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, या फिर आप इस जो एक्सप्लेनेशन का मार्क दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं एज पर यू। ठीक है, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्रोसीड promote this server to domain controller. It will show you the next step like this. Add a domain controller to existing domain. दूसरा add a domain controller to existing forest, और लास्ट ऑप्शन है add a new forest. So starting के जो दो ऑप्शन है add a domain controller to existing forest and the add a new domain controller to existing domain and existing forest. So this is our first domain controller, ये अपना first domain controller. So definitely in case of first domain controller हम यहाँ पे जाएंगे add a new forest. Type the name of our domain controller, कोई सा भी नेम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ cloud.com. यहाँ पे हम डोमेन जो क्रिएट करना चाहते हैं ना विद द हेल्प ऑफ cloud.com, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। cloud.com, class.com, xyz.com, abc.com, किसी भी नाम से हम डोमेन कंट्रोलर को सेटअप कर सकते हैं। हम यहाँ पे cloud.com के नाम से हम सेटअप करना चाहते हैं अपना डोमेन कंट्रोलर। नेक्स्ट, दिस इज DSRM पासवर्ड। अगला जो ऑप्शन है विच इज रिलेटेड टू द DSRM पासवर्ड, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। बेसिकली डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड एज पर द नेम सजेस्ट, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब सिस्टम पे का बैकअप आप कॉन्फ़िगर करते हैं, सिस्टम स्टेट बैकअप का।
We'll talk about the procedure of system state backup. Hello, can you hear me? Yes. Okay, so it is in progress. We just need to provide the password of our DSRM, and after that, we'll proceed to install the Active Directory services. Now, you must need to provide the password for DSRM ताकि जब हम इसको रीस्टोर करें तो इस पासवर्ड के थ्रू हम इस मशीन को रीस्टोर करा सकते हैं. Next, and proceed for the next and install. It will check the entire prerequisites. If everything is okay, we are able to install. ये prerequisite panel है जहाँ पे सारे prerequisites check होगी. एक भी prerequisite means अगर हमने fulfill नहीं की तो definitely it will give us a error और वो हमें resolve करना पड़ेगा. Prerequisite completed, we just need to click on install.
This is the final step, so maybe it will take up to 3 to 5 minutes. And जैसे ही ये install हो जाता है, system will automatically restart, and after that we are able to use this machine as a domain controller. Then AD installation के बाद second step आता है, you need to install at least one client operating system. जिस client operating system के ऊपर हमने अपने AD के users को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करेंगे, लाइक जीपीयू इन्वॉल्व करना, डेलीगेट करना, ग्रुप क्रिएट करना, ग्रुप के थ्रू सर्विसेज मीन सर्विसेज इन द सेंस लाइक एज पॉलिसीज या डेलीगेट करना क्लाइंट को मैनेज करने के लिए. Installation completed, system will automatically restart. काफी इसमें टाइम लग रहा है सर. हाँ, दिस इज द फाइनल स्टेप, इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. ठीक है, सो नेक्स्ट एजेंडा हमारा रहेगा एडी के अंदर यूजर्स को मैनेज करना, टू मैनेज ठीक द है. एडी ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर. चार पांच तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, तीन तरीके के कंटेनर्स होते हैं, उन पे हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे. ठीक है ठीक है, सर. हाँ जी. सो विल डू इट टुमारो, इज दैट ओके? या श्योर. ठीक है, विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम.
Take care. I'll send you the recording. Maybe in 1 hour. नो प्रॉब्लम सर, एंड उसको मेल आईडी पर ही शेयर कर देना, जो मैंने मेल आईडी हाँ आपको हाँ दी है ना, श्योर. पे हाँ शेयर कर ठीक है. देना। थैंक यू सर, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं अभी आपको भेजती हूँ। श्योर. थैंक यू. टेक केयर. थैंक यू सर, टेक केयर। Yeah.